Good evening, hello and welcome to Plain Speak. I'm Anusha Soni. The Assam government has launched a massive crackdown against child marriages in the state of Assam. The state chief minister Himanta Biswa Sarma put out the details, asserting that action will be taken against all individuals responsible for this heinous crime. About 2,000 people and more have been arrested so far. That's what the state DGP has stated. The highest number of arrests have been reported from certain districts including Dhubri, Barpeta and Nagaon. Now, the state of Assam is one of the worst performers on certain indices such as the maternal mortality rate and the infant mortality rate. The move of the government aims to target child marriages, which seem to be the root cause of this performance. But the move is not without its controversy. Political opponents argue that it's targeted towards a particular community, while the government vehemently denies such charges. Let's explore various layers and facets of this debate by first understanding the fundamentals, laws that govern child marriages across the country. What does the law of the land say? Is the state government right in doing what it's doing? Our first focus, laws that govern child marriage. What does it entail? That's our focus. Now, the legal marriage age in India for a girl is 18 and for a boy is 21 years of age. Now, whoever performs or conducts or directs child marriages shall be punished with a rigorous imprisonment of 2 years and a fine that can go up to 1 lakh rupees. That's what the law of the land says. Child marriages are valid if child doesn't declare it void at 18. That's a very important point to understand, that child marriages are not void ab initio. They need to be declared illegal once the ceremony has been solemnized. But what happens when there are provisions of POCSO that are involved? This is a petition which is pending at the Supreme Court of India. The NCPCR, the child rights body, has raised this matter of the Supreme Court, that various practices under personal law, including the Muslim personal law, that permit the marriage of underage girls, that should be struck down. So what should prevail? That's the key question that we are asking. POCSO. If a girl is getting married between 15 and 18 years, it can be a victim of penetrative sexual assault. This is the law of the land. That's what POCSO says, that sex with a girl under the age of 18 is an offence. It has to be counted as sexual assault. Personal laws permit that. As I said, Muslim personal law permits the marriage of a girl who attains puberty, 15 years or more. That's something which is allowed. Let's move on. NCPCR, as I said, has moved the Supreme Court of India. It has contested various High Court judgments that have allowed such marriages under Muslim personal law. Various conflicting judgments of the High Court have said that perhaps this is something, a customary practice that has been accepted. There was a landmark judgment of the Supreme Court in 2017 that read down the exception under the Indian Penal Code that allowed a wife of over 15 years of age, and if the between the sex between a husband and a wife is below 15 years of age, that shall be counted as rape, as sexual assault if the wife is less than 18 years of age. That was a landmark ruling that had come in. So, as far as the entire journey and trajectory and evolution of laws in this country is concerned, not talking about all aspects of the personal law, but one particular aspect, which is about marriage of underage girls, the evolution seems to be moving in the direction that we should stop this. And of course, the final word needs to come from the Supreme Court of India. That's the law of the land, broadly speaking. But talking about how the governments should really pursue this, more importantly, what survives when there is a conflict, in the event of a conflict. Now, the Assam government's crackdown. This is a bid to end the menace of child marriages in the state. By many accounts, if you look at the NCRB data as well, it tells you that high instances of child marriages have been recorded in various districts of Assam. 4,000 plus cases of child marriage registered just in about 9 days. That's what the state government claims. 1,800 plus, about 2,000, that's the latest number that has come in. But more than 1,800 accused have been arrested so far across the state. This includes people who are directly involved. It also includes priests, qazis or pandits who are party to this crime which is happening. There is an extensive state-wide operation in the next 3 to 4 days. This is going to be the focus of the state government, putting out a very, very clear message that child marriages by the administration are not going to be tolerated. The government says this is a drive to reduce the mortality rate. As I earlier said, infant mortality rate and maternal mortality rate is a point of concern for Assam. There are various voices within the opposition that claim that this is a one-sided, selective approach
of the state government and has political overtones as well. We'll discuss all of those aspects, but not to forget that the key debate here is that do personal laws trump child rights? Personal laws which are violative of child rights, which are violative of the provisions of the POCSO, can they survive in modern independent India after 75 years of independence and the great constitutional journey that we have seen as a modern democratic republic? That's the key question that we ask here on Plain Speak tonight. Subsequently, we started collecting data. Initially, we had collected data for 2022, 2021 and 2020. Most of the cases have been registered under different provisions of POCSO Act and sections of IPC. Let's take this question to our panel of guests who are joining us on the broadcast. We have Pramod Swami from the Assam BJP, who's a spokesperson. Jeherul Islam from the AIUDF, who's a spokesperson, is also joining us on the broadcast. Ashwani Dube, who's an advocate on record from the Supreme Court of India. And Mr. Ravikant, who's the country head India from the Kailash Satyarthi Foundation, is also joining us on the broadcast. Mr. Swami, I'm coming to you first. What is the motive of the state government? And how do you rebut all the allegations that have been made that this perhaps could be politically motivated or targeted towards a particular community? Mr. Swami. हाँ, इसमें हमारा मोटो एक ही है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी की जो दर जो है वो आसाम में काफी बढ़ गई थी, क्योंकि बाल विवाह की वजह से मातृशक्ति की और बच्चों की मृत्यु हो रही थी। तो सरकार ने उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए और जो 14 बरस की जो उम्र है, 14 बरस की उम्र जो शादी की उम्र नहीं होती है, और इसके लिए एक देश में एक कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसको पोस्को एक्ट बोलते हैं। उस पोस्को एक्ट के तहत सरकार ने कार्रवाई की है कि 14 वर्ष की उम्र में अगर बच्चियों की शादी होगी तो उनके स्वास्थ्य पे भी खराब असर पड़ेगा, और वो अगर उनके जो बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य पे भी खराब असर पड़ेगा, और इससे जो मृत्यु दर है वो भी काफी बढ़ रही है, और इससे जो विभिन्न रकम की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो सरकार ने ये कदम जो है हमारी मातृशक्ति को सक्षम बनाने के लिए, मातृशक्ति के हितों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है, और इस कदम को किसी जाति, धर्म और भाषा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माता और बहनें हमारी जो हैं उनको अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये इस देश में दो रकम के मापदंड नहीं हो सकते। 14 वर्ष की उम्र की शादी की उम्र जो है वो कानूनन भी वैध नहीं है, और उसको नैतिक आधार पे भी वैध नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर 14 साल की बच्चियों की शादी एक आजाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं, जैसे एक पूरी एक बहस है जो सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट्स में हो चुकी है, बहुत सारे अलग अलग फैसले भी आए अलग अलग उच्च न्यायालयों से, चाहे वो दिल्ली चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो या कर्नाटका हो, कई जगह से अलग अलग जजमेंट्स आए, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर एक फाइनल, एक अंतिम निर्णय अपना देना है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल की उम्र के बाद एक लड़की की शादी की जा सकती है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इस देश में हैं जिन्होंने कहा है कि एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, इसको माना जाता रहा है इस देश में, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त नहीं कर देता ये कन्वेंशन, ये कस्टम चलता रहेगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए, कानून जो है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस पे विधि के जो जानकार है और न्यायालय जो है वो इस पे अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, और न्यायालय जो भी पक्ष रखेगा उस पक्ष को मानने के लिए असम सरकार भी इसमें मानने के लिए बाध्य है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने कानूनी पक्षों की सारी जानकारी लेकर करके ही ये कार्य किए हैं।
तो मेरे ख्याल से कानूनी इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और बाकी तो न्यायालय का जो फैसला है उसका इंतजार हम करेंगे। न्यायालय में अगर कोई जाता है तो न्यायालय इसके ऊपर में निश्चित रूप से विचार कर कर करके अपना जो मत न्यायालय रखेगा उस मत का निश्चित रूप से सम्मान किया जाएगा। जी जी, जहरुल इस्लाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहरुल जी, आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी। असम सरकार का कहना है कि उनका जो पूरा कदम है वो महिला स्वास्थ्य के हित में है, वो समाज कल्याण के लिए एक ऐसा कड़ा कदम है जो सरकार उठा रही है, और उसको किसी जाति या धर्म से जोड़ना सिर्फ राजनीति है, सरकार की मंशा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम भी हैं, हम भी इसका खिलाफत करते हैं, हम भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, समाज में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। ये चाइल्ड मैरिज होने से समाज में बहुत सारा खराब प्रभाव आ जाता है, जिसके वजह से सामाजिक जो बंधन है वो भी खराब होता है, और चाइल्ड मैरिज के वजह से जो बच्चियां हैं उनका भी उनका भी जीवन सब में बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, ये सब हम मानते हैं। लेकिन आज आसाम गवर्नमेंट जो काल से शुरू किया है, चाइल्ड मैरिज करने वाला जो लड़का है उनको गिरफ्तारी का जो कार्यक्रम शुरू किया है, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक 2044 accused has been arrested by Assam government अभी तक जी। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो केसेस गवर्नमेंट ने लिया है जिसके आधार पर इनको अरेस्ट कर रहे हैं, ये 2019, 2020, 2021, 2022 इन 4 सालों के बीच में जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं उनके आधार पर इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि अब से 2021 से पहले भी असम में बीजेपी का गवर्नमेंट था, तब जब केस रजिस्टर हुआ था तब इसी तरह आज जिस तरह आप लोग हार्ड स्टेप उठा रहे हैं उसी तरफ आप लोग पहले क्यों नहीं उठा रहा था? क्यों एक साथ इतना सारा आप लोग चमक देने के लिए कि 2000, 3000, 5000 हम अरेस्ट करेंगे? नहीं, तो आपका सवाल सरकार की टाइमिंग पे है कि अगर आप हजारों लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया? लेकिन मेरिट पर आप सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, सरकार की मंशा पर आपको कोई शक नहीं है, क्या ये बोलना सही होगा? मैं यही बोल रहा हूँ, यही पे आ रहा हूँ। सरकार चमक देना चाह रहा है कि हम मतलब जो मूल इशू है, जो मेन इशू है, इससे डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये हमेशा सरकार का एक गेम प्लान रहा है। कौन सा मूल इशू, कौन सा मूल इशू, बड़ा मुद्दा, ये सब लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जब लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं तब ये गवर्नमेंट क्या करता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सब भी तो डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं इस पूरे देश के। अभी फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया का 2.2 है, अभी कम हो गया है। अभी हर जाति हर धर्म के लिए ये कम हो गया है। अच्छा, चलिए एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं। नहीं, आपने सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाया, ये सवाल मैं प्रमोद स्वामी से जरूर पूछूंगी। मेरा आपसे सवाल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी को आज भी शरीयत के कानून के तहत जायज माना जाता है, और उसको इंडियन लॉ में भी कई हाई कोर्ट्स ने वैलिड माना है। उनका कहना है कि प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिस जो चलती आई है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी लंबित है। इस पूरी प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी इस्लाम के धर्म में या किसी भी धर्म में परमिटेड होनी चाहिए कानूनन रूप से? देखिए, जो पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, जैन का भी है, सबका है। पर्सनल लॉ जो है वो पर्सनल लॉ के तहत जो 15 इयर्स में मुस्लिम बच्चियां शादी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 195 के आधार पर ये प्रावधान है, ये राइट है। अभी गवर्नमेंट अगर उनका जो हिडन मंशा है वो चाहते हैं कि ये चाइल्ड मैरिज तो ज्यादा मुस्लिमों के बीच में हो रहा है, और इसी के हिसाब से मुस्लिम को थोड़ा तरसार करने के लिए अगर ये चमक देना चाह रहे हैं तो वो गलत है। वो गलत है। कोई मुसलमान नहीं चाह रहे कि अपने छोटे बच्चे को वो शादी कर दे, उसका जीवन बर्बाद कर दे। नहीं, देखिए सर, होता क्या है कि हम सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ तो ये है ना कि अगर कानूनन रूप से मुसलमान बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो सकती है, तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो बहुत सारे कारणों की वजह से करते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या कानूनी रूप से इस तरह की पर्सनल लॉ प्रैक्टिस को किसी भी तरीके की वैधता मिलनी चाहिए? जहरुल इस्लाम। नहीं, अभी जो प्रैक्टिसेस चल रहा है, ये प्रैक्टिसेस तो आज से नहीं चल रहे हैं, ये कई सालों से चल रहे हैं।
तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बिल ला जाए, सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड क्लियर करे कि मुस्लिम पर्सनल वोट देना चाहिए नहीं चाहिए, हिंदू पर्सनल वोट देना चाहिए नहीं चाहिए। आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास भी जाना चाहूंगी। I'd like to cut across to my other guest as well, Mr. Ashwani Dube, and Ravikant is also with us on the broadcast. Ashwani ji, coming to you first. There's a conundrum of sorts that exists within the Indian law when it comes to personal law versus the POCSO. What does the IPC say? And that precarious situation that child marriages are not void ab initio. But let me simplify it further. Should any personal law which is in direct conflict with POCSO, such a serious law that has been drafted for the sexual and mental health protection of children in this country, should any personal law survive the teeth of POCSO? No, see, Anusha, the POCSO Act, the Child Marriages Act, then the marriage is derived from the religious scriptures. Right. So the marriage is derived from the religious scripture is upfront to the Child Marriage Act 2006. It is upfront to the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Why? There is a reason. Answering first question, the Prohibition of Child Marriage Act 2006 seeks to prohibit the solemnization of marriages of the girl below the age of 18 years and boy below the age of 21 years. Very rightly, very candidly, you have, Anusha ji, referred that is not the wide of initio, that is not the marriage is not that is not permitted, but that is also not void. So the Act prescribes penalties for solemnization, promotion and allowing of child marriage. Now coming to the another aspect, the Protection of Children from Sexual Offences Act was enacted to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and to provide a child-friendly system for the trial of these offences. Yeah. The Act provides the sexual offences against the children below the age of 18 years shall be illegal, shall be an offense, and shall be child has been defined means that any person below the age of 18 years. Right. If there is a law, two laws exist, can it be said that look, our personal law says that at the age of 14 years, that is very tender age, very small age, we can do it, and there is various conflicting judgments. Now, third, the Supreme Court, Anusha ji, we have raised this argument with you on you only we have had. While triple talaq issue was pending in the Supreme Court said, look, various forms of talaqs and various other practices which are upfront to the constitution, which upfront to the law of the land, should be also declared as void ab initio, but we have to have the religious scholar's opinion. Now my friend has argued that look, this is an attempt to politicize this. Look, 4,000 child marriages are taking place in a state. 10,000, 15,000 people are involved. So it means it is not only the progressive, it is contrary to the progressive society, it is also harming the. So would it be correct to say, Ashwani ji, that your opinion is that if there is any personal law that permits the marriage of underage girls below the 18 years of age, that personal law should not survive in this country anymore? Is that your opinion, sir? Of course, yes, this is my opinion, and that there has to be a clear constitution, article 21 and 14, 15, 21, which says that there should not be any discrimination in the garb of quote unquote protecting some kind of diversity or so-called personal laws. These kind of practices in modern independent India are outdated and should have no place. Ravikant ji, I'm coming to you and taking in a word from you. Child marriage is a youth social evil. There's a law that exists in the statute book. Various efforts have been taken by various state governments across the country. Right now, what the state of Assam is doing, how do you perceive the actions and the criticism which has come in from certain political quarters? I think it is a most welcome step on behalf of the Assam government to take action because, you know, political leadership, if they are involved in social issues and they take up these issues, especially violation of protection of child rights, I think it's a big move which should be lauded. And steps needs to be taken to ensure that perpetrators who have committed this crime should be punished. Let me also explain you, because child marriages, there is a very big social acceptability across the country. In societies, people accept child marriages, and therefore legal deterrence is one very important initiative which governments can take, which can bring the fear of the law. And also it is important to understand that child marriage is a cross-cutting issues to human trafficking, to child sexual abuse, to domestic violence, and many other crimes. And therefore,
the steps taken by Assam government is welcome step. Ravikant ji, Number two, you work on the ground with many survivors, with many victims, with many children who face these kind of, God forbid, these very, very difficult situations that one finds it's very difficult to imagine and fathom. But when it comes to such personal law practices that continue to survive in this country, where the marriage of underage girls below the age of 18 is permitted, what kind of impact does it have on the mental, emotional and sexual health of a girl child? See, any child going through a marriage, as has been rightly pointed out, and also from the NFHS data which is coming out, there is a huge impact on terms with respect to maternal mortality, in terms of infant mortality, in terms of violation of in terms of empowerments of the girl child. There are a lot of issues involved when young girls are forced into marriage. Okay. We live in a constitutional regime. The Constitution of India is very clear that over the time the Parliament will make laws for strengthening the strengthening rights of women and children, and protecting their rights. I have last 2 minutes on the show. I want to go back to Pramod, Swami and Jeherul Islam. Pramod, Swami, coming to you. I am not doubting the intent of the state government when you say that there's a crackdown on child marriages. I think it should have happened much earlier. And this kind of step should be taken in various other states across the country to send a very strong political message that this will not be tolerated. But the question that the opposition is asking you is that why have you done it right now? Why didn't you take these steps earlier? Why did you wait for the situation to worsen? And more importantly, this kind of piecemeal effort, where in one go there is a 15-day drive and then the administration forgets about it. Will you sustain this momentum? आपने ये जो पूरी ड्राइव शुरू की है, क्या ये आने वाले समय में भी चलती रहेगी, या जैसे ही हेडलाइंस खत्म हो जाएंगी वैसे ये ड्राइव भी खत्म हो जाएगी? देखिए, हम जो भी काम करते हैं वो समाज के हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो AIUDF के साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा कानून तो अच्छा है, लेकिन कानून को जरा देर से लेकर के आए। भाई, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कानून है तो आप उसका स्वागत कर रही है ना, फिर उसमें उसकी नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाम में 30% जो हमारी जो लड़कियों की जो शादी होती है वो 18 साल की जो कानूनी उम्र है उससे पहले की कर दी जाती है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और इसमें एक अवेयरनेस की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है, जो केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने एक आधिकारिक एक सर्वे किया और उस सर्वे में जो नतीजे आए हैं, उसका जो डेटा है, उसके अनुसार आसाम में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह की जो स्थिति आसाम में वो काफी मतलब भयावह स्थिति है और इसकी वजह से जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर में काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्वे किया, उसके आधार पर उसकी रिपोर्ट आने के बाद, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने इस विषय पर चिंतन मंथन किया। एक आरोप आपकी सरकार पर यह भी लगाया गया अभी कि आप कुछ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की, इसलिए आपने 2000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर आपकी सच में मंशा ऐसी कुछ होती तो आप लॉन्ग टर्म में ऐसे कदम उठाते। इस तरह से तो आप कुछ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसा कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि कानून तो अच्छा है लेकिन देर से लेकर आए और राजनीतिक मुद्दों से हटकाने के लिए हम इस कानून को लेकर के आए हैं। तो राजनीतिक मुद्दों की बातें तो चुनाव के समय होगी, जब चुनाव आएंगे तो राजनीतिक मुद्दों लेकर के और अन्य मुद्दे लेकर के आप लोग जनता के बीच में जाइए, आपको कौन रोकता है? और अंतिम शब्द में जेहरुल इस्लाम से लूंगी। जेहरुल इस्लाम, में आपके पास आती हूँ। ये एक सामाजिक कुरीति है और सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए पहली बात तो ये है। नहीं सर, एक सवाल मेरा भी, फिर आप अपनी बात बोल लीजिएगा। सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए सिर्फ कानूनन और राजनीतिक का कदम नहीं उठाने चाहिए, समाज में अंदर भी एक किस्म का मंथन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी इस देश में नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम समाज में ऐसा हो रहा है, तो क्या समाज में अंदर से बदलाव की कोई अपेक्षा की जा सकती है? जेहरुल इस्लाम। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अभी जो एक ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठा है, उनने बनाए अकॉर्डिंग टू NFHS, इनका रिपोर्ट के हिसाब से पूरा इंडिया में जो टोटल मैरिज होता है वहां उससे 23% चाइल्ड मैरिज होता है।
23% चाइल्ड मैरिज होता है। और चाइल्ड मैरिज किसके बीच में होता है? जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उनके बीच में ज्यादा चाइल्ड मैरिज होता है। तो गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं देते हैं? जो हमारा, मैं आसाम की बात कर रहा हूँ, आसाम में ये बीजेपी शासन चल रहा है। बीजेपी शासन के टाइम में आसाम में, अभी पूरा इंडिया में आसाम नंबर 1 पे है। जो नारी निर्यातन होता है उसमें आसाम नंबर 1 पे है। जो बच्चे जन्म होते हैं, जो बच्चे मर जाता है, उसमें नंबर 1 पे आसाम आता है। बीजेपी गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर कदम नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो टोटल बजट है 79%। मैं आपसे जाते बस यही पूछूंगी, तो आप सरकार के इन सारे कदमों का स्वागत करते हैं, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये काफी हाई है, तो चाइल्ड मैरिजेस पे तो सरकार को कदम उठाना ही चाहिए। तो फिर आपका जो तर्क है, आपका क्रिटिसिज्म है, वो क्यों है? नहीं, कदम उठाना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन दिखावा के लिए नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो कदम उठाया है ना, वो 2-3 दिन के अंदर ठप हो जाएगा। देखते हैं सर आगे क्या होता है। और ये सवाल भी जायज है that this is an entire step that needs to be taken in the long run. I'm short of time. I thank all of you gentlemen for joining us on the broadcast. Pramod, Swami, Jeherul Islam, Ashwani Dube and Ravikant ji. Personal laws have their own place under Indian Constitution, but any personal law that permits the marriage of a girl or a child under the age of 18 should not have any place in modern independent India, a constitutional position that perhaps should be reaffirmed by the top court of the country. The matter is pending there for a final debate. Well, with that, we are slipping into a very short break. On the other side, the battle between the Supreme Court and the government of the day continues. The top court warns the government that any further delay in deciding on the appointments or the transfer will invite the ire of the court. The biggest